जो डेंटिस्ट ये मेक श्योर कर लेता है कि मरीज को दर्द नहीं होता, तो मरीज उसका मुरीद बन जाता है। I am Prof.Dr. Navid Rashid Qureshi and Principal of Liaquat College of Dentistry. I would like to share a good news with our audience. Lcmd has been around for the last 20 years, recognized by Pakistan Medical and Dental Council, listed in WHO directory. हम अपना एक चैनल बनाना चाहते हैं और उस चैनल की मदद से अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस एंड क्लिनिकल टिप्स शेयर करना चाहते हैं अपने कॉलीग्स के साथ। आज का प्लान ये है कि वी वुड लाइक टू गो थ्रू लोकल एनेस्थीसिया। आपको पता है डेंटिस्ट्री में जो सबसे बड़ा फेयर है लोगों का, वो है दर्द का, पेन, एंड पेशेंट डज नॉट वांट टू कम टू अ डेंटिस्ट बिकॉज ऑफ द फेयर ऑफ पेन। जो डेंटिस्ट ये मेक श्योर कर लेता है कि मरीज को दर्द नहीं होता, तो मरीज उसका मुरीद बन जाता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस करते हुए हैज बीन मोर देन 30 years and I have been referred patients and I have seen lots of patients जिसमें डेंटिस्ट कंप्लीट एनेस्थीसिया ना दे सका, जिसकी वजह से मरीज को ट्रीटमेंट के दौरान पेन रहा एंड पेशेंट डिड नॉट गेन दैट ट्रस्ट फ्रॉम दैट डेंटिस्ट। तो ये मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हमारा डेंटिस्ट जो है इस बात को बहुत लाइट लेता है, लेकिन फॉर अ पेशेंट, इफ यू थिंक फ्रॉम द पेशेंट्स पर्सपेक्टिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कंप्लीट प्रोफाउंड एनेस्थीसिया। तो लेट्स गो थ्रू इंफीरियर एल्वुलर नर्व ब्लॉक। तो जब मरीज हमारे पास आता है तो इमेजिन कीजिए कि पेशेंट आपके पास आके बैठ गया। Today I'm going to only refer to an adult patient, क्योंकि जब वो छोटा बच्चा होता है या बूढ़ा होता है, the anatomy is different in a child and anatomy is different in an older patient. तो फिलहाल मैं आज बात करने जा रहा हूं ऐसा पेशेंट जो एडल्ट हो और जिसके मुंह में टीथ हो। तो पेशेंट हमारे पास आके बैठता है तो ब्लॉक का पहला असूल ये है, you should not give inferior alveolar nerve block while the patient is sitting upright. यानी पेशेंट को सीधा बिठा के मुंह खोल के एनेस्थीसिया नहीं देना चाहिए। उसके बेसिकली दो रीजन है। जब आप उसको सीधा बिठाते हैं और पेशेंट का मुंह खुलवाते हैं, so the inferior border of the mandible is not parallel to the floor, which is the first principle in giving block anesthesia. So imagine कीजिए if the patient is sitting upright and you are going to ask the patient to open wider, then the lower border is not parallel to the floor. So this would cause compromise while you're giving the anesthesia. तो पहला असूल तो ये हो गया, जब आप पेशेंट को बिठाते हैं तो patient should be supine at an angle so that when the patient opens the mouth, inferior border is parallel to the floor. The second basic reason why you would not like to give anesthesia while the patient is sitting upright is fainting, is syncope, vasovagal syncope, which is very common the moment, because the patient has come with anxiety, and the moment you are going to show, number one, the needle, which you should not, and number two, if the patient is sitting upright, chances of fainting is higher. So what you do when the patient comes to you, you should have a patient at an angle so that when the patient opens the mouth, the floor should be parallel to the inferior border of the mandible, and chances of fainting would be less. तो हमने नीडल सिलेक्शन करनी है, तो मैं इसमें से एक छोटी सी टेक्निक बताने लगा हूं।
जो अगर आप लोग अडॉप्ट कर लें तो आपका एनेस्थीसिया की एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी. So this is mandible. Now imagine the patient is sitting like this and now you have opened the mouth. So the floor is parallel to the inferior border. So what you have done, you have taken a syringe. In Pakistan, we generally do not use an aspirating syringe. Ideally, preferably an aspirating syringe should be used. क्योंकि anesthesia इस region में only 10% has been reported to go in the vessels. इसलिए we get away without using the non-aspirating syringe. So 27 gauge or 30 gauge needle हमने ली. The technique is इस needle की जो tip है, एक तरफ उसका bevel है, एक तरफ उसका pointy end है. So what you do, ये जो pointy end है, आपने क्या करना है, इस needle की जो pointy end है, before inserting the needle, just tip it towards the pointy end, away from the bevel. And what you do then, see, and you hold the needle like this. अब आपने लिया, आपने लगाना है left inferior alveolar nerve block. Opposite premolar से मैं अंदर जाने लगा हूं. 1 centimeter above the occlusal plane, 1 centimeter above the occlusal plane, and the pointy end would be facing towards the inferior alveolar foramen, which is here. So the bevel would be facing towards your throat. So what I'm going to do, जब मैं opposite side से आऊंगा, 1 centimeter above 4-5 से आया, पेशेंट के मुंह में टेरिगोमैंडिबुलर रैफ है और एक फॉसा सा बना हुआ है. तो आपने उस फॉसा को हिट करना है. जो ये पॉइंटी एंड है, इस पॉइंटी एंड को टुवर्ड्स द फोरामेन रखना है. बेवल को आपने पीछे की तरफ रखना है. जैसे आप पॉइंटी डिफ्लेक्टिव एंड को इस तरफ रखेंगे, इट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू गो एंड हिट द बोन. द चांसेस इज यू वुड नॉट मिस द बोन. So what you do, you go from here and you go inside and touch the bone and slightly withdraw and then give the anesthesia. जब आपने एनेस्थीसिया दे दिया, 2/3 of the cartridge दे दिया, 1/3 आपने फिर नीडल को विथड्रॉ किया और लिंगुअल नर्व को दे दिया. अब आपका एनेस्थीसिया खत्म हो गया. यहां पर एक जो प्रॉब्लम है, बाज दफा क्या होता है कि आपका एनेस्थीसिया इज नॉट इफेक्टिव, एंड देन व्हाट यू डू एंड मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट डज इज गिव अनदर ब्लॉक. नहीं होता 2 मिनट के बाद दे गिव अनदर ब्लॉक. दिस इज नॉट द राइट वे. इसके लिए क्या करते हैं, अगर आपका ब्लॉक एनेस्थीसिया इज नॉट इफेक्टिव आफ्टर 2-3 मिनट्स, फॉर सम रीजन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, फॉर सम रीजन what you simply have to do, आपने पेशेंट की पोजीशन यहां से हटाकर अपराइट करनी है और पेशेंट से कहना है कि अपना हेड को बेंड कर लें फॉरवर्ड. तो वो पेशेंट यूं करके लेटा हुआ था, आपने उसे कहा अपना सीधा सर करो और आगे कर लो. एंड इंटरेस्टिंगली आफ्टर 2-3 minutes you would see your anesthesia inshallah would be effective without giving the second block anesthesia. So I hope you would like this video, and we are planning to do more of such videos. Thank you very much.